और हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद असगर अली खान साहब जो कि प्रिंसिपल CMD हैं रेलवे के, आपसे निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। और हमारे स्टेट IMA AMS सेक्रेटरी डॉक्टर DK सिंह सर से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे साइंटिफिक सेक्रेटरी आप भी मंच के आसपास ही रहें। अपने स्थान पर खड़े रहें डॉक्टर प्रेयर के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, न तोऽहं कामये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखप्राप्तानां, प्राणिनां आर्तिनाशनाय। धन्यवाद। मंचासीन अतिथिगण, सभागार में उपस्थित सभी सीनियर मेंबर्स एवं सम्मानित मित्रों का मैं तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव अभी आए नहीं हैं, लेकिन हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर राजेश झा जो गोरखपुर जिले के सीएमओ हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। वेलकम सर। सर की डायनामिक पर्सनैलिटी एवं स्माइलिंग फेस हमें हमेशा से प्रभावित करता रहा है। वे हम सभी चिकित्सकों के हर सुख दुख में एक मजबूत पिलर की तरह खड़े रहते हैं। वी फील ऑनर्ड टू इनवाइट यू। थैंक यू सर। गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर असगर अली खान CMD ND रेलवे, जिन्होंने हम सभी को यह प्रतिष्ठान झिंगरन मेमोरियल हॉल उपलब्ध कराया है एवं तन मन से अपनी पूर्ण भागीदारी निभाई है। आपका भी आज के इस प्रोग्राम में स्वागत एवं अभिनंदन सर। इसके साथ मैं UP IMA AMS के सेक्रेटरी डॉक्टर DK सिंह, डॉक्टर RP शुक्ला जो यहाँ के रिनाउंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, डॉक्टर वाई सिंह सेकेंड बेस्ट सेक्रेटरी UP IMA सिलेक्ट में इस बार। प्लीज आप लोग कॉपी बहुत जरूरी है। और साइंटिफिक सेक्रेटरी गोरखपुर IMA जो बहुत ज़्यादा एकेडमिक से इंटरेस्ट रखते हैं और फुटीज स्कॉट्स इंस्टीट्यूट से आए हमारे लर्निंग स्पीकर्स डॉक्टर JS मेहरावर जो रिनाउंड कार्डियक सर्जन हैं। वे कार्डियक सर्जरी के ऊपर अपना व्याख्यान देंगे और हम सभी का ज्ञानवर्धन करेंगे। सर, आपका यहाँ पर उपस्थित होना हम सभी के लिए बेहद गौरव की बात है। थैंक यू, थैंक यू। फोर्टीज स्कॉट्स हॉस्पिटल से आए डॉक्टर संजीव गुलाटी जो रिनाउंड नेफ्रोलॉजिस्ट हैं एवं किडनी ट्रांसप्लांट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। आपका भी स्वागत एवं सादर अभिनंदन। डॉक्टर संजीव गुलाटी किडनी ट्रांसप्लांट की नई तकनीक के बारे में अपना व्याख्यान देंगे। हमारे शहर के मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी आ रहे हैं, उनका आप लोग तालियों से स्वागत। आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जो हमारे शहर के लोकप्रिय महापौर भी हैं, उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वे काफी सहज एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं एवं हमारे सभी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हाल ही में उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गौरव की बात है। उन्हें जन संचय जन भागीदारी पुरस्कार से भी ऑनर किया गया है। हम सभी को उन पर बेहद गर्व है। वेलकम सर। मैं डॉक्टर DK सिंह जो UPI में MS के सेक्रेटरी सिलेक्टेड है,
उनका भी हार्दिक तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इसके साथ डॉक्टर गीता जायसवाल जो एक्स IMA प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और यहाँ के नॉन गायकोलॉजिस्ट हैं गोरखपुर की, उनका भी स्वागत। और ये हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर सेक्रेटरी IMA जो डॉक्टर वाई सिंह हैं, उनका भी स्वागत। मैं इस बात से खुद को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि हमारे IMA की हर तरह की एक्टिविटीज जैसे मेंबर्स वेलफेयर, ऑल टाइप्स ऑफ एकेडमिक्स, सेमीज एंड कॉन्फ्रेंसेस, सोशल एक्टिविटीज जैसे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स, फ्री IMA OPD जो सीतापुर आई हॉस्पिटल में नियमित रूप से चल रहा है, में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आप सभी चिकित्सकों को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ये हमारे लिए सुखद अनुभूति जैसा है। ट्री प्लांटेशन, पॉल्यूशन बोर्ड NOC, फायर NOC, CMO रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल एवं अनेक सामाजिक कार्यों में हमारी टीम ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। उसके लिए आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। IMA OPD में शुरुआत 2017 से अभी तक मोर देन 70,000 पेशेंट्स को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराया गया है। खुशी एवं गर्व की बात यह है कि इस निरंतर चल रहे IMA OPD में आज तक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी नियमित रूप से मरीज देख रहे हैं। उनका कार्य भी अत्यंत प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। और अभी डॉक्टर AK सिंह जो एडिशनल CMO गोरखपुर हैं, हम चिकित्सकों का समय समय पर उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ये हम चिकित्सकों का समय समय पर हर प्रकार का सहयोग करते रहते हैं, उनका दिल से धन्यवाद। हमारे सभी सदस्यों के सेवा भाव एवं योगदान से मंद बुद्धि बाल संस्थान जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण देता है, पूरे पूर्वांचल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे टीम द्वारा नवनिर्मित IMA भवन में ब्लड बैंक की स्थापना की पहल शुरू हो चुकी है। इसमें टीकाकरण एवं फ्री OPD चलाने की सारी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, जिससे आम जन को स्वास्थ्य लाभ एवं हर तरह की सुविधाएं मिलें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे IMA भवन में ब्लड बैंक की स्थापना 1 साल के अंदर हो जाएगी। तो बहुत गौरव की बात है। आप लोग पिछले 1 वर्ष में IMA को उत्साही साथियों के साथ जनता एवं चिकित्सक बंधुओं की जितनी देर मैं सेवा कर चुकी हूँ, ये मुझे आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। इसके अलावा हमसे भी कोई त्रुटि हुई हो, आप अपना समझकर मुझे माफ कर देंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी लिखी हुई कविताओं की कुछ पंक्तियां आपको सुनना ही होगा। चूंकि मुझ पर कोटेज का जारी लग चुका है, तो मैं बिना कविता सुनाए छोड़ती नहीं है। कभी खरी है कभी खोटी है, कभी खरी है कभी खोटी है, जीवन की अवधि छोटी है। क्यों न ऐसा करें हम, क्यों न ऐसा करें हम, मंद मन बहती हवा की तरह मंद मन मुस्कुराएं, जीवन का हर लम्हा उत्सव के रूप में मिले। थैंक यू ऑल। धन्यवाद मैम, आपने पूरा अपना जो भी 1 वर्ष का कार्यकाल रहा काफ़ी अच्छा रहा और अच्छे से आपने समराइज भी किया। और कार्यक्रम के बाद हम लोगों के बीच एडिशनल CMO डॉक्टर AK सिंह सर का भी आगमन हुआ है। आपका मैं स्वागत करता हूं। सर हम लोगों के मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे CMO रजिस्ट्रेशन का मामला हो या कोई भी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल से संबंधित। डॉक्टर गगन गुप्ता सर, आपका भी स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मंगलेश सर के लिए एक बार फिर से तालियां बजें। सर को जल संचय में प्रदेश में प्रथम और पूरे देश में 3रा स्थान मिला है अपने गोरखपुर को। और इसमें 2 करोड़ की एक राशि भी मिली है शहर को। सर ये शहर को मिली कि आपको मिली?
पार्टी होनी चाहिए, एक पार्टी होनी चाहिए। एक पार्टी आईएमए की तरफ से हम लोग सर को अलग से देंगे और उसमें से कुछ हिस्सा हम लोग आईएमए भवन के लिए दान स्वरूप भी लेंगे। और एक और मैं बहुत ही खुशी की बात बताना चाहूँगा कि हम लोगों के ब्लड बैंक का एप्लीकेशन आज सबमिट हो गया एसएसबीटी में, जो स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट है, इसमें आज हम लोगों का एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। हम लोगों ने अपने ब्लड बैंक के लिए पहला कदम रख दिया है और हम लोगों का सिविल वर्क भी स्टार्ट हो गया है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अब चूंकि हमारे सारे अतिथिगण आ चुके हैं तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें और डॉक्टर झिंगरन के तस्वीर पर पुष्पार्चन करने की कृपा करें। अच्छा हो गया। अब मैं डॉक्टर बिजनेस यादव सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर। मैं डॉक्टर संजीव सिंह को आमंत्रित करूंगा कि डॉक्टर दिनेश चंद्रा से रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर सीता जायसवाल मैम को बुके लेकर के सम्मानित करें। डॉक्टर भारतेंद्र जैन से रिक्वेस्ट है कि वो आप डॉक्टर गगन गुप्ता सर को बुके लेकर के सम्मानित करें। शहर के प्रथम नागरिक जो हमारे दोनों स्पीकर्स आए हैं, डॉक्टर जेएस मेहरवाल सर और डॉक्टर संजीव गुलाटी सर को बुके देकर के हम लोग की ये बड़ी की बात है कि हमारे महापौर साहब हम लोगों के परिवार के सदस्य हैं और हमारे दोनों अतिथि स्पीकर्स का स्वागत कर रहे हैं। कहाँ रुके हैं, हम उनके पुराने पेशेंट दिखाना है तो हमने कहा डॉक्टर साहिब से बात करिए, वही नहीं करेंगे। कुछ लोग हमें लगता है दिखाए भी होंगे। और आज के कार्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें हमारा गोरखपुर हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। अभी हम लोगों ने लगभग 7 स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस गोरखपुर में की हैं। अभी ये कॉन्फ्रेंस अभी पीडियाट्रिक्स की होनी है और हमारे कई सम्मानित सदस्य ऐसे हैं जो स्टेट लेवल पर या तो अपने संस्था के स्पेशलाइज्ड ब्रांच के सचिव हैं या अध्यक्ष हैं। और मैं निवेदन करूंगा अपने महापौर सर से कि हमारे इन सदस्यों का स्वागत करें। डॉक्टर शशांक सर जो कि यूपी स्टेट ऑप्थेल्मिक सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए हैं इस बार के लिए, सर से निवेदन है कि आप आए और मंगलेश सर मोमेंटो देकर सर का स्वागत करें। गोरखपुर का नाम ऊंचा करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। अब मैं इसमें से जो वरिष्ठ सदस्य हैं वह लोग काफी जानते हैं उनके बारे में, कुछ हमारे नए सदस्य हैं जिनको उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और जो हमारे अतिथिगण हैं उनको भी मैं डॉक्टर झिंगरन के बारे में बताना चाहूँगा। डॉक्टर इनका सर का पूरा नाम डॉक्टर सुधीर गोपाल झिंगरन था। ये इनका जन्म 2 फरवरी 1929 को हुआ था और ये ललित नारायण मिश्र रेलवे हॉस्पिटल में
डीएमओ ऑब्लिक सर्जन के पद पर कार्यरत थे। यह इस क्षेत्र के पहले कार्डियोथोरेसिक सर्जन थे। जब लखनऊ तक में भी कोई कार्डियक सर्जन नहीं था, हमारा ये रेलवे हॉस्पिटल इतना विकसित था कि यहाँ पे कार्डियक सर्जरी होती थी, वॉल्व रिप्लेसमेंट होते थे, ये सारी एडवांस सर्जरीज यहाँ पे हुआ करती थी। सर इतने काइंड हार्टेड थे कि कई बार आवश्यकता पड़ने पर अपने मरीजों को अपना खुद का ब्लड डोनेट करते थे। और दुर्भाग्य ये रहा कि उनके इसी दरिया दिली की वजह से एक बार किसी पेशेंट का हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी चल रही थी, अचानक उसको ब्लड की आवश्यकता पड़ी थी, तो डॉक्टर साहब अपना ब्लड डोनेट कर रहे थे। ये घटना है 4 मार्च 1966 की, 1966। तो संयोग से कुछ एम्बोलिज्म हुआ, कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब की डेथ हो गई। आज का दिन हम लोग आईएमए का एक तरह से वार्षिक उत्सव होता है, एनुअल फंक्शन हम लोग इसको कहते हैं, उनकी याद में हम लोग इसको मनाते हैं और उनको सम्मान देते हैं और उनको याद करते हैं। अब मैं आईएमए के इस वर्ष हुए कार्यों के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी दूंगा। 22 जनवरी 2025 को हम लोगों ने अपना शपथ ग्रहण किया था। उसके बाद अगला कार्यक्रम हम लोगों का होली मिलन का कार्यक्रम हुआ था, जो कि बहुत ही धूमधाम से हुआ था। और हम लोग का जो होली दिवाली फंक्शन होता है वो बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहे हैं, और सब हमारे आईएमए के सदस्य ही उसमें परफॉर्म करते हैं और अपने कार्यक्रम करते हैं, उनके बच्चे करते हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से ये कार्यक्रम होता है। इसके अलावा इस बार जो कुंभ था, इस बार का कुंभ पूरे विश्व में बहुत ही ऐतिहासिक रहा। इसमें एक समय ऐसा आया कि वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि खास करके जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स थे, मेंबर्स थे, वह जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तो ऐसे में आईएमए ने यह बीड़ा उठाया, जिसमें आरपी शुक्ला सर, डॉक्टर दिनेश चंद्रा, डॉक्टर अमरेश सिंह, डॉक्टर प्रतिभा मैम, सब लोगों ने मिलकर इस असंभव से कार्य को पूरा किया। हम लोग लगभग 52 चिकित्सक 10 गाड़ियों से वहाँ गए और शासन प्रशासन का भी सहयोग मिला। हम लोग ईंट तक, अपने टेंट हाउस तक गाड़ियों से गए और बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ हम अपने सम्मानित सदस्यों को वहाँ से स्नान करा के ले गए। इसके अलावा जब पहलगाम की घटना हुई थी तो उसके विरोध में भी काफ़ी बृहद रूप से हमारे आईएमए के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें हमारे महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सर भी शामिल रहे। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके तत्वाधान में भी सौर तिरंगा यात्रा भी आईएमए गोरखपुर में काफ़ी शानदार तरीके से निकाला गया। इसके अलावा जो भी अलग अलग दिवस होते हैं, चाहे वर्ल्ड हेल्थ डे हो, चाहे डायबिटीज़ डे हो, चाहे कैंसर दिवस हो, तो विश्व कैंसर दिवस पर डॉक्टर ए.के. चतुर्वेदी सर के नेतृत्व में हम लोगों ने एक कैंसर जागरूकता रैली निकाला था और एक छोटा सा टॉक भी किया था, जो कि बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से हुआ था। इसके अलावा डॉक्टर्स डे के कुछ समय पहले ही हम लोगों ने अपने 28 सीनियर डॉक्टर्स को फेलिसिटेट किया था होटल रेडिसन में, जो कि एक बहुत ही सफल और शानदार कार्यक्रम हुआ था। इसके अलावा डॉक्टर्स डे पे हम लोगों ने एक नया परंपरा इस बार से शुरुआत किया है, स्वर्णिम चिकित्सक सम्मान। इसमें हम लोग इस बार 1962 बैच तक के डॉक्टर्स को हम लोग सम्मानित किया था, जिसमें लगभग हम लोगों ने 40 चिकित्सकों को सम्मानित किया। और कई चिकित्सक जो हमारे वरिष्ठ चिकित्सक थे, जो किसी कारणवश या स्वास्थ्य की वजह से कार्यक्रम में आने में असमर्थ थे, तो उनको हम लोगों ने उनके आवास पर जाकर के सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर दिनेश चंद्रा, डॉक्टर डी.के. सिंह, डॉक्टर आर.पी. शुक्ला सर और डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता मैम, डॉक्टर गगन गुप्ता सर, डॉक्टर अमरेश सिंह, आप सब लोगों का काफ़ी सहयोग और योगदान रहा। इसके अलावा हम लोग नियमित रूप से जो भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे विश्व
दिवस के अवसर पर हम लोग हर वर्ष करते हैं, उसी के कड़ी में इस वर्ष हम लोगों ने योग दिवस का कार्यक्रम किया था, जो कि डॉक्टर अंजू जैन मैम और डॉक्टर पीसी साई सर के नेतृत्व में ये हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ढंग से किया था। इसके अलावा अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के क्रम में हमारा LA नियमित ब्लड डोनेशन कैंप्स करता रहता है। इसके अलावा हम लोग स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन करते हैं, समय समय पर अलग अलग स्थानों पर करते हैं, कभी ग्रामीण इलाकों में करते हैं, कभी शहर के कुछ हिस्सों में करते हैं। हम लोग का IMA हाउस है सीतापुर आई हॉस्पिटल कैंपस में, उसमें भी हम लोग करते रहते हैं। ये ब्लड डोनेशन कैंप है, उसकी तस्वीर है। इसके अलावा फिर हम लोगों का दीपावली सेलिब्रेशन का कार्यक्रम हुआ था। इसका जो मेन परफॉर्मेंस था वो तो बिल्कुल समा बांध देने वाला था, पिन ड्रॉप साइलेंस था जब ये कार्यक्रम हो रहा था, और ये सब हमारे सम्मानित सदस्यों ने किया था परफॉर्म। कई लोग जो नए आए थे या बाहर से भी कुछ लोग थे, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर्स इतना प्रोफेशनल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे PSC रिक्रूटमेंट कैंप है, जहाँ पर महिला और पुरुष दोनों कैडेट्स रहते हैं। उनके बीच जा करके हम लोगों ने डेंगू से और इन्फेक्शियस डिसीज और फीमेल रिक्रूट्स को गायनिक से संबंधित प्रॉब्लम को लेकर के हम लोगों ने जागरूकता कार्यक्रम रखा था। इसमें एक अच्छा टॉक हम लोग किए थे, इसमें डॉक्टर ओरेशन भी गए थे। इसके अलावा हम लोगों के स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर आशीष अग्रवाल सर का गोरखपुर में आगमन हुआ था, जिनका कि हम लोगों ने स्वागत किया था कोर्टयार्ड में जाकर के। इसके अलावा IMA क्लिनिक सीतापुर नेत्र अस्पताल कैंपस में एक बड़ा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुआ था, जिसका आयोजन हम लोगों ने किया था। और हम लोग एक जो हमारे गेस्ट लोग हैं उनको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे IMA निःशुल्क क्लिनिक चलाता है, जिसमें सारे सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक अपनी सेवाएं देते हैं। और यहाँ पे जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो भी हम लोग लगभग 20-25% कॉस्ट में, या जो थोड़ी सी महंगी होती है उनको 40-50% डिस्काउंट पे हम लोग वो सर्विसेज देते हैं। और सारे स्पेशलाइजेशन का डे फिक्स है, और हर दिन 9 से 12 हम लोग की OPD होती है, जिसमें हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक NABH एक्रीडिटेशन अवेयरनेस कैंपेन चलाया था, जो कि NABH और QCI के सहयोग से दिल्ली से टीम आई थी कि हम लोग कैसे अपने को अपग्रेड करें, और NABH एक्रीडिटेशन को प्रमोट करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजन हुआ था, जिसमें सम्मानित सदस्यों ने अपनी सहभागिता भी की थी। इसके अलावा यहाँ पर पोतार कैंसर इंस्टीट्यूट है, जो कि नियमित रूप से अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते रहते हैं। उनके साथ मिलकर के भी हम लोगों ने डॉक्टर GK रथ सर को बुलाया था, और एक कैंसर से जागरूकता कार्यक्रम हम लोगों ने किया था, और एक CME भी हम लोगों ने किया था। और अपने सामाजिक दायित्वों के क्रम में ही समय समय पर हम लोग सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं। हमारे CMO सर और डॉक्टर AK सिंह सर, जो कि एडिशनल CMO हैं, उनके अनुरोध पर लगभग 60 से 65 चिकित्सकों ने TB मरीजों को गोद लिया था, जिसमें उनको 6 महीने तक का जो एक पुष्टाहार होता है उसका संकल्प लिया था, और उन लोगों ने किया था। इसके अलावा समय समय पर हम लोग जिला स्तर के जो भी क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी होते हैं उनसे अपना मिलते रहते हैं, एक सामंजस्य बनाए रहते हैं। उसी क्रम में दूसरा विभाग के रीजनल ऑफिसर से हम लोगों की मीटिंग हुई थी, उनका काफ़ी अच्छा सहयोग रहा था, और पॉल्यूशन एनओसी उन लोगों को काफ़ी आसानी से मिला था। इसके अलावा बाबा गोरखनाथ के मंदिर में हर वर्ष बाबा महंत अवैधनाथ और दिव्यनाथ जी की श्रद्धांजलि सभा होती है, जिसमें
IMA के तरफ से IMA सचिव डॉक्टर वाई सिंह यानी कि मैं वहाँ पर अपना स्पीच दिया था, उनको श्रद्धांजलि दिया था। इसके अलावा एक दुखद घटना हुई थी। हमारी एक सदस्य, उनके हस्बैंड का कुछ अराजक तत्वों द्वारा किडनैप हुआ था, थोड़ी देर के लिए हुआ था, लेकिन बहुत ही कम समय में और सकुशल उनको रिकवर कर लिया गया था। और जैसा कि योगी जी का तरीका है काम का, कुछ आरोपियों को तो ऑन द स्पॉट ठीक ठाक सजा मिल गई थी, कई का हाफ एनकाउंटर हुआ, कुछ फुल एनकाउंटर होते होते बच गए, कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा। तो उसको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैम के साथ हम लोग SSP सर को भी मिले थे और उनको धन्यवाद दिए थे। और सम्मानित अतिथियों को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे हम लोग एक मन बुद्धि बाल संस्थान चलाते हैं, जिसमें दिव्यांग बच्चों को, मानसिक दिव्यांग बच्चों को हम लोग रिहैबिलिटेशन की ट्रेनिंग देते हैं। वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उस प्रोडक्ट्स को ज़्यादातर हम IMA के सदस्य ही खरीदते हैं और उनकी जो सब्सिडी होती है वो हम अपने सदस्यों से ही सहयोग लेकर के उस संस्था का संचालन करते हैं। और ये हमें लगता है कि कितने वर्ष से आती सुनता सर, कितने साल से चल रहा है? 25-30 साल हो गया होगा और ज़्यादा हो गया सर। ये 40 वर्षों से चल रहा है, 40 वर्षों से निरंतर चल रहा है, बिना रुके ये चीज़ चल रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने कई CMEs वगैरह भी कराई हैं। हम लोगों के जो एक्स नेशनल प्रेसिडेंट IMA डॉक्टर शरद अग्रवाल सर को भी एक CME में हम लोगों ने बुलाया था, जो कि UP IMA के पैट्रॉन भी हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का चित्र है, जिसमें हम लोगों ने अपने IMA क्लिनिक को अपग्रेड किया। स्पेशलाइजेशन के साथ साथ सुपर स्पेशलिस्ट सुविधाएँ भी हम लोग स्टार्ट किए और इसमें बहुत ही रियायती दर पर हम लोग ब्लड जांच वगैरह भी करते हैं। इसके अलावा हम लोग एक जो आसपास की हमारी ब्रांचेज हैं, एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए उनके जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें हम लोग सहभागिता करते हैं। उसी क्रम में बड़हलगंज ब्रांच के ओथ सेरेमनी में हम लोग गए थे, जिसमें वहाँ के अध्यक्ष और सचिव महोदय ने अपना पदभार ग्रहण किया था। इसमें डॉक्टर HN सिंह अध्यक्ष चुने गए हैं, जो कि वहाँ के विधायक भी हैं। और IMA का जो इस वर्ष का सबसे बड़ा लक्ष्य और अभी उपलब्धि तो नहीं कहेंगे, ब्लड बैंक कैसे संचालित हो, कैसे चलाया जाता है, इसका अध्ययन करने के लिए एक टीम हम लोग गए थे प्रयागराज ब्लड बैंक का स्टडी करने। वहाँ पर हम लोग इसमें डॉक्टर DK सिंह सर, डॉक्टर AP गुप्ता सर, डॉक्टर अमरेश सिंह, डॉक्टर दिनेश चंद्रा, डॉक्टर RP शुक्ला सर, आप सब लोग हम लोग साथ में गए थे और वहाँ पर अच्छे से उसकी स्टडी की है और हम लोग काफ़ी हद तक उसी पैटर्न पर अपना कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को मैंने आज बताया कि आज फॉर्म कंप्लीट हो गया है, सिविल वर्क स्टार्ट हो गया है और इस पर चाहेंगे तो हम लोग मार्च अप्रैल तक हमारा ब्लड बैंक स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर आकाश सिंह, जो कि यहाँ के पहले रोमेटोलॉजिस्ट हैं, उनके मार्गदर्शन और उनके सहयोग से हम लोगों ने CME का भी आयोजन किया था। बीच बीच में हमारे सदस्य और पदाधिकारीगण माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलते रहते हैं। कुछ दिन पहले ये मेरी मुलाकात है, जिसमें हम लोगों ने उनको अपने कार्यों की जानकारी भी दिया और CMO रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष के लिए करने के लिए उनको आभार भी ज्ञापित किया। हम लोगों का एक क्विक एक्शन ग्रुप चलता है, सम्मानित सदस्यों को मैं बताना चाहूँगा। ये थोड़ा नया है गोरखपुर में, जिसका संचालन शुरुआत डॉक्टर DK सिंह के नेतृत्व में और उसका बखूबी संचालन डॉक्टर शिवशंकर शाही जी करते हैं। और हमारे वहाँ किसी भी सदस्य के वहाँ कोई भी घटना होती है तो कुछ ही समय में एटलीस्ट आसपास के 15-20 डॉक्टर पहुँच जाते हैं और आधे से 1 घंटे के अंदर वहाँ कम से कम 50 की संख्या में चिकित्सक पहुँच जाते हैं। और हम लोगों का
जो कार्य करने का तरीका है, कोई वहाँ हम लोग हल्ला लल्ला नहीं करते हैं, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, बस अपनी एक स्ट्रेंथ दिखाने के लिए वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम लोग की काफ़ी समस्याएं केवल एक हम लोगों की स्ट्रेंथ अच्छी होने की वजह से, और चूँकि छोटा शहर है, कई बार ऐसा होता है कि जो मरीज है या जो बवाल करने वाले लोग हैं किसी न किसी डॉक्टर के परिचित निकल आते हैं, तो कुछ समस्याएं तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। उसी तरह के एक मैटर में हम लोग SHO से डॉक्टर LB गुप्ता सर के प्रकरण में मिले थे। इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, अपने IMA ब्रांच को बेस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी अवार्ड मिला है पूरे प्रदेश में, और मुझे एज ए सेक्रेटरी सेकेंड बेस्ट सेक्रेटरी स्टेट में मिला है। डॉक्टर अमरेश सिंह को बेस्ट कॉन्फ्रेंस कराने के लिए अवार्ड मिला है, और हमारे ट्रेजरर डॉक्टर गगन गुप्ता सर को प्रेसिडेंट एप्रिसिएशन अवार्ड मिला है। यह अपने ब्रांच के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी जो हम लोगों का लास्ट इवेंट हुआ है, हम लोगों का स्पोर्ट्स मीट हुआ है, अभी संडे को ही हुआ है। यह डॉक्टर शांतनु अग्रवाल और अंजू जैन मैम के नेतृत्व में डॉक्टर SP अग्रवाल, इन लोगों ने मिल करके, डॉक्टर दिनेश चंद्रा और ये लोग मिल करके बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्स इवेंट करवाए थे। ये हमारी कुछ फिक्स हैं, क्योंकि हम लोगों का क्विक एक्शन ग्रुप का जो एक्टिविटी होती है, रेगुलर मीटिंग्स भी हम लोग करते रहते हैं। महीने में 1.5 महीने में एक मीटिंग किसी न किसी सदस्य के वहाँ रखते हैं। बाकी ये तस्वीरें हैं जो क्विक एक्शन के बुलावे पे सदस्य, जो भी पीड़ित सदस्य हैं, उनके वहाँ पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर असगर अली खान सर का कि हम लोगों को 2 मिनट अपना आशीर्वचन प्रदान करें। Respected Chief Guest Dr. Mangesh Srivastava, Mayor Gorakhpur, Guest of Honor Dr. Rajesh Jha, CMO Gorakhpur, Guest of Honor Dr. ATC, Additional CS Gorakhpur, IMA President Dr. Pratibha Gupta, IMA Secretary Dr. Y. Singh, Dr. PC Shahi, Dr. Sunita Yadav, Dr. R.P. Shukla, Dr. Gagan Gupta, all dignitaries, esteemed members of the IMA and dear guests. First of all, I welcome you all in the children's hall of MISRA Railway Hospital, Gorakhpur. I am honored to be the special guest of this prestigious function and extend my warm greetings to all of you. As you all know, this function is organized every year in the memory of great legend Dr. S.E. Jhingran, who was working as a surgeon in this hospital, and he sacrificed his life during donating his own blood required for the treatment of patients of this hospital. The Indian Medical Association has been a icon of excellence in healthcare, and I am privileged to be part of this celebration. As doctors, we are the pillars of our healthcare system, dedicated to serving humanities with compassion and skill. Your tireless efforts have improved countless lives, and your commitment to the medical excellence is truly commendable. IMA's role in promoting healthcare awareness, advocating for the public health, and fostering medical research is invaluable. I appreciate your effort in advancing medical sciences and serving the community. I congratulate the awardees and appreciate the IMA efforts in recognizing outstanding contribution to the medical field. May this function inspire us to reform our commitment to healthcare and noble profession of medicine. Thank you, IMA, for organizing such an event today. Thank you. मैं अपने विशिष्ट अतिथि डॉक्टर AT सिंह सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोगों को थोड़ा सा आशीर्वाद दें। नमस्कार सभी को। इस जनरल कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्माननीय मेयर साहब,
आदरणीय शिवमो साहब, आदरणीय एमडी साहब, बल्कि सीएमडी सर आजकल आप सीएमडी की कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। आईएमए अध्यक्ष, आईएमए सचिव और समस्त हमारे सीनियर्स, जूनियर्स भी हैं। बड़ी प्रसन्नता और हर्ष का विषय है मेरे लिए कि मैं इस कार्यक्रम में और बहुत ही मेमोरेबल और एक लंबे समय से चले आ रहे अमृत निरंतर चलने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। मेरे लिए गर्व का विषय है। बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक यहाँ से मैसेज लेके जाना चाहता हूँ कि जिनकी याद में हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं, उनके उन गुणों को आत्मसात करके हम यहाँ से जाएं। जो काइंडनेस उनके अंदर थी अपने पेशेंट्स के लिए, पब्लिक के लिए, उसकी आज के समय में बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि इस समय समाज में हमारे प्रोफेशन को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी खामियाँ पैदा हो रही हैं और आप लोग आए कि इसको फेस भी कर रहे हैं। हम लोग को पेशेंट से सीधा डायरेक्ट हम लोगों का कम्युनिकेशन नहीं होता, पर आपसे शायद ज़्यादा हम उसको फेस करते हैं कि यहाँ विश्वास उठ जाओ, वहाँ आप विश्वास उठ जाओ। आप लोगों से कई बार हम कांटेक्ट भी करते हैं, ये कंप्लेन आई है, वो कंप्लेन आई है। तो इन चीज़ों को, इन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए ये बड़ा आवश्यक है कि जिसके लिए डॉक्टर झिंगरन जाने जाते थे, जिस गुण की वजह से सर्जन बहुत बड़े थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, वो एक अलग बात है, लेकिन कितने बड़े काइंड हार्टेड थे, पब्लिक के लिए, अपने पेशेंट्स के लिए डिवोटेड थे। उनका वो गुण हमें लेना है। तो ये गुण हम आत्मसात करेंगे तो शायद ये जो हमारी और पब्लिक और मरीजों के बीच में एक खाई बन रही है, उसको हम पार पाएँ। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। हम लोग इसीलिए आईएमए के कई सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम चलाते रहते हैं और आपको ये आश्वस्त करते हैं कि इसका हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। और अब मैं अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि अपना आशीर्वचन हम लोगों को प्रदान करें। सहयोग तो सर का बहुत रहता है हम लोगों को, सभी आईएमए सदस्यों को। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर, हमारे रेलवे के पीएमडी डॉक्टर असगर खान साहब, मंचा सिंह जो भी हमारे मित्र लोग हैं, डॉक्टर भाई सिंह साहब, सामने जो सीनियर्स हैं और हमारे जो ऑपरेटर्स आए हुए हैं और साथ में जितने भी आए हुए के मेंबर्स हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया। बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलता है आईएमए से और जब से मैं आया हूँ, अगर मैंने कुछ कहा तो तुरंत मुझे उस पर रिस्पॉन्स मिला। कई बार विषम परिस्थितियों में भी मैंने कॉल किया। कुछ जैसे कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे मिशन कि आपका ऑपरेशन सिंदूर टाइप में हमें ज़रूरत पड़ी, या और भी बहुत सारे समय पे कभी एम्बुलेंस का, कभी हम लोग जैसे उसमें कुछ लोग को जैसे कि रिहर्सल करने पड़े या कुछ ऐसे हमें एम्बुलेंसेस वगैरह की ज़रूरत पड़ी, ड्रिल्स होते थे एयरपोर्ट्स वगैरह में, और हर समय आगे बढ़ के हमारे साथ आया और उसमें लोगों को बहुत साथ दिया। तो जो भी दिखा रहे थे डॉक्टर वाई सिंह, उससे बहुत अधिक हमने देखा है आईएमए का काम, और इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई है। आप लोग का बहुत अच्छा कैरियर चला हुआ और बहुत बढ़िया हम लोग अपने मतलब जो ऑपरेटर्स आए उनको सुनने के लिए बैठे हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एक नई चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरी वाई सिंह साहब से बात भी हुई है कि हम लोग एक पॉलीक्लिनिक का कॉन्सेप्ट लाए हैं शहरी क्षेत्र में। जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें हम लोग स्पेशलिस्ट सेवाएं देने जा रहे हैं, और इसमें जैसे कोई नए लोग हैं जो अपना प्रैक्टिस इस्टाब्लिश कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको 5000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मानदेय टाइम इसमें मिलेगा, और हर दिन 2 स्पेशलिस्ट बैठेंगे। तो इसका अभी हम लोग आज या कल पेपर में भी आएगा, और मैंने एक डॉक्टर वाई सिंह साहब को और चिट्ठी भी लिखी है
तो आप लोगों को पता लग जाएगा, आपके ग्रुप में आ जाएगा कि किन किन स्पेशलिस्ट की जरूरत है जो इसमें इंटरेस्टेड अप्लाई करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं हमारे IMA परिवार के अभिभावक और शहर के प्रथम नागरिक और दिल्ली से दूसरा पुरस्कार लेकर के आए राष्ट्रपति महोदया से डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों को अपना आशीर्वचन और मार्गदर्शन दोनों प्रदान करें। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर असगर अली खान साहब, डॉक्टर राजेश शाह, डॉक्टर AK सिंह, हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता और नौ प्रेसिडेंट जो अभी आने वाले डॉक्टर RP शुक्ला साहब, डॉक्टर स्मिता मैम और डॉक्टर PC शाही और हमारे आज के व्याख्यानकर्ता डॉक्टर संजीव गुलाटी, डॉक्टर नारायण के साथ साथ मैं अपने सभी सम्मानित IMA के सदस्यों का बहुत बहुत अभिवादन और वंदन करता हूँ। जैसा कि अभी डॉक्टर वाई सिंह बता रहे थे कि जो है प्रेसिडेंट अवार्ड तो गोरखपुर के लिए बड़े गर्व की बात है। इन सब गोरखपुर वासियों ने ये करके दिखा दिया कि जो है जहाँ हमारा कहीं नाम नहीं था वो हम चौथे और तीसरे पिछले स्वच्छता के मामले में चौथे स्थान पर देश में रहे और जल संचय और जन भागीदारी के कार्यक्रम में अभी जो है हम लोग को दूसरा राष्ट्रपति अवार्ड मिला और ग्लोबली भी हम लोग के कार्यों को बहुत सराहा गया। तो मैं समझता हूँ कि गोरखपुर वासी इस बात के लिए बहुत अपने ऊपर गर्व कर सकते हैं कि इस गोरखपुर की जो राष्ट्रीय पटल है उसके ऊपर हम उसको लिए। जैसा कि अभी डॉक्टर झा कह रहे थे कि आज हमें अपने एक्सपर्ट्स को सुनने का मौका ज़्यादा होना चाहिए कि जो है हम लोग भाषण देते रहे, हम लोग तो आपस में हमेशा ही बातें करते रहते हैं। तो और मैं समझता हूँ कि हम लोग तो मैं लगभग सभी कार्यक्रमों में रहता हूँ तो मेरा बोलने का औचित्य और कम हो जाता है। तो आप सबके जो मुझे ब्लेस किया और आशीर्वाद दिया, आप सबकी प्रेरणा से मैं इस कार्य में सफल पाया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारी अध्यक्ष महोदया ने काफ़ी मेहनत करके और बहुत ही पर्सनल टच दे करके एक बुकलेट अपना हम लोग निकाले हैं और सभी डॉक्टर अली सर का उनको साथ में डॉक्टर JP जायसवाल सर से रिक्वेस्ट है, डॉक्टर नदीम अरशद सर से रिक्वेस्ट है कि आप CMO सर को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संतोष सर से निवेदन है डॉक्टर संतोष शंकर। अब मैं डॉक्टर दीप्ति चतुर्वेदी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रतिभा गुप्ता मैम को Good evening, everyone. Today, as we gather here for the Jhingran Memorial Oration, we remember not just a surgeon, not just a pioneer, but a man whose life redefined the true meaning of medical empathy, duty, and sacrifice. Dr. Sudhir Gopal Jhingran
was not just a simple clinician, he was a symbol of extraordinary dedication. He was a symbol of professional whose compassion for his patients stood above everything else. His life story is not just history, it is an inspiration, a lesson, and a moral compass for every doctor sitting here. In the world of medicine, knowledge makes us competent, but empathy makes us truly great. Empathy is not just an emotion, it is the invisible bridge that connects a doctor's mind to a patient's soul. It is the gentle force that transforms treatment into healing. Dr. Jhingran embodied this spirit in its purest form. When no donor was available, he did what only a doctor with a divine heart could do. He chose to give his own blood to save a patient's life. And in that act of courage and humility, he left behind a legacy that will inspire generations. His life reminds us that a doctor's touch can ease pain even before the medicine works. That our compassion is often the strongest therapy we can offer. That patients don't remember the prescription we write, they remember the kindness we show. And that service to humanity is the highest form of worship. In today's fast-paced mental world filled with technology, protocols and pressures, let us not lose the soul of our profession. Let us remember that every patient who enters our OPD is not just a case, but a human being carrying fear, hope and trust. Let us remember that our responsibility does not end with diagnosis, it begins with understanding. And let us remember that the greatest honor for our doctor is not the degrees we earn, but the lives we touch. I request everyone to give a big round of applause for Dr. Sudhir Gopal Jhingran for his incredible journey as a professional. So once again, good evening respected seniors, distinguished faculty members, dear colleagues and friends. On behalf of IMA, I welcome each one of you to this academic evening. Jhingran Oration is not just a meeting, it is a celebration of learning, sharing and professional excellence. In today's rapidly evolving world of medicine, staying updated is not optional, it is essential. Each new guideline, study and clinical observation reshapes the way we practice. This CME is designed to empower us with practical insights, evidence-based updates, and the wisdom of some of the finest minds in our field. Ladies and gentlemen, it is my privilege to introduce a speaker whose reputation precedes them, a clinician with depth, a teacher with clarity, and a researcher with an unshakable commitment to excellence. Whenever they speak, complex topics become simple and every listener goes back enriched and inspired. Please join me in welcoming Dr. Jadis Meherwal, who will enlighten us with their expertise on this very important subject of current trends in valve and CVT surgery. Dr. Jadis Meherwal is the chairman and head of adult cardiac surgery, heart transplantation and ventricular assist devices program, and is a part of the founding team of doctors at Otis Escorts Heart Institute. He has more than 30 years of experience in cardiac surgery with over 30,000 surgeries, including complex heart operations and left ventricular assist devices. He is pioneering many new cardiac operations in the country. He has been actively involved with teaching and training. He is the program director of DNB cardiothoracic surgery at Otis Escorts Heart Institute. Please welcome with a huge round of applause, Dr. Jadis Meherwal.
Good evening, friends. At the outset, I'd like to thank the Indian Medical Association Gorakhpur for inviting us for this very important event, which is Jhingran Memorial Oration. I'm really impressed by the Indian Medical Association Gorakhpur, and I was listening to the great work the doctors in Gorakhpur are doing. Not only as the doctors, but also the contribution to the society. I think it is commendable, and I really appreciate the efforts of the doctors. That's what really we need to do all over the country. I think a lot of things I could even remember, but what the message which I got was that we as doctors have a responsibility not only to treat the patient, but to give back to the society more than just as a physician. Really more than that. I'm really honored to do this Jhingran Memorial Oration, and I didn't know that the vital work was done in Gorakhpur way back in 1966. I think it's really a matter of pride for the city and for the country. And my tribute to Dr. Jhingran, not only a great surgeon, but a great human being, and we need to learn a lot of things from him. I'm sure he's an inspiration for the doctors who probably know a little bit about him. And we as doctors certainly can not only learn as to how we can become a good doctor, a good physician or a surgeon, but beyond that, how we can heal the patient even before we operate or before we give the medicine to the patient. I've been asked to speak a little bit on the current trends in valve and CVG surgery. Cardiac surgery, so-called open heart surgery, started long back in 1957, so it's almost 7 decades now it's being performed. In India, this is starting in the 60s. My first experience of open heart surgery was in King George's Medical College, and this is again very interesting. The first open heart surgery in KGMC was done in 1981, and I was a young intern at that time, and obviously an intern won't be allowed to go to the operation theatre to watch an open heart surgery. But because the infrastructure was so primitive, we didn't have a blood gas analyzer in the cardiac theatre complex, and the machine was in the nephrology department, which was a little away from the operation theatres, and they wanted a volunteer who could take the sample from the theatre, go to the nephrology department, get the blood gas system, and bring it back. So I volunteered for that, and as a reward, I was allowed to stay in the operation theatre. And it was really thrilling to see when the heart stopped. It was an atrial septal defect closure. Professor Kensina, under whom I did my PhD, he was operating, and when the heart stopped, I said, heart to band ho gaya, I don't know how this is going to start again. It was really thrilling, and I said, if I get an opportunity, I'd like to be a cardiac surgeon, and by God's grace, I became a cardiac surgeon. So let me just briefly take you through some of the advances in valves. The two commonest operations which we perform in any major cardiac surgery is coronary artery bypass grafting and the valve repairs and replacement. There have been huge developments in both the fields, particularly in the last 2.5 to 3 decades. So I'll briefly go through some of the advances in valve surgery. The first so-called evolution of valve replacement was in 1960s when a surgeon by the name of Albert Stark, with his engineer friend Edwards, they invented this valve, so-called Starr-Edwards valve. It was a ball and cage valve, and using this valve, Albert Stark did the first mitral replacement in 1960. And it became commercially available after a few years in 1964. And after that, hundreds and thousands of patients received this valve for their disease valve.
This valve was discontinued a few years back. Because now we have the better valves available. So this got discontinued a few years back. We still have many patients who come to us who had this valve replaced many years back. In fact, I saw a patient very recently who had a Star Edwards valve replaced about 29 years back. So these patients are still coming to us. And after that, many companies came out with multiple valves, and obviously a lot of them came into the market and disappeared. The currently available valves, they are mostly bi-inlet valves. They have two inlets. The only Indian valve which is available is called TTK Chitra valve. This was developed by the Chitra Institute, and this is not a bi-inlet valve. This is a tilted disc valve. But these mechanical valves, they have a major drawback. The patient has to be on lifelong anticoagulation, which has its on major hazards, including bleeding, valve thrombosis, and thromboembolism. So considering these drawbacks, the surgeons, again with the industry and the researchers, they started developing the tissue valves. So the second revolution in the valve was in the 70s and 80s. When the tissue valves were developed, initially the porcine valves and then the bovine pericardial valves. And he's a cardiac surgeon who was pioneering developing the pericardial as well as the porcine valves, the Carpenter. And currently we have a large number of tissue valves which are in the market. So we have the option of multiple valves. But again, the structure, the tissue valve also have a major drawback, that the valve degenerates after a few years, so-called structural valve degeneration. So both mechanical valve as well as the tissue valve, they have certain drawbacks. So when a patient comes to us for the replacement of the valve, we have a choice of mechanical valve or a tissue valve. And when we decide about the valve, we have to choose between the two based on the risk of anticoagulation, which is required in mechanical valve, versus the risk of structural valve degeneration, requiring the operation, which is the risk of the tissue valve. And then we go by various guidelines. The two societies which make the guidelines is the American College of Cardiology and American Heart Association guidelines, so-called American guidelines, and the European guidelines by the European Society of Cardiology and European Association of Cardiology. And there are obviously various criteria to decide about the valves, but an important criteria is the age of the patient. So younger the patient, the mechanical valves are used, and older the patient, the tissue valves are used. So patients who are in 50s and 60s, we prefer mechanical valve. Patients who are beyond 60 or 65, the tissue valves are preferred. There are certain specific situations when we use a tissue valve. For example, a lady who wants to become pregnant, even in younger age, this avoids the risk to the mother as well as to the fetus, the risk of anticoagulation. So in the childbearing age, even in the young age, we prefer tissue valve. Some of the developments which have occurred in the field of valve replacement are in the designs of the valve, both mechanical and tissue valve, the techniques of surgery, as well as in the anticoagulation management. One of the developments in the technique is the use of valve repairs. We use valve repair whenever possible. It is more commonly done in the mitral valve because the aortic valve is difficult to repair, but mitral valve, a lot of times we repair, and there are many techniques of repairing both the posterior defect products as well as the anterior defect products. The techniques of repair has evolved over the last 3 decades, and now a lot of authorities of the mitral valve can be repaired. The valve after the repair, we use a ring
So this is the vital loop which prevents the further appearance of the vital leaflet. The repair of the anti-vital leaflet prolapse is more complex. At the same time, there are multiple techniques which we use for repair of the anterior leaflet prolapse as well. Another development which has occurred is the development of minimally invasive valve surgery, and this is done to avoid not only the risk to the patient but also to give better cosmetic results for a faster recovery, and also patient can go back to the work faster. Again, there are multiple techniques which we use to replace the aortic valve and the mitral valve. So this is one of the common techniques which we use for minimally invasive aortic valve replacement. The second intercostal space, as you can see on the right side, upper partial sternotomy, again for the aortic valve replacement, for the mitral valve and the tricuspid valve. Pointer देंगे ना कोई? So for the mitral valve and the tricuspid valve, we use the anterior thoracotomy, and all these techniques are primarily used, one, to decrease the trauma to the patient, to give better cosmetic results and a faster recovery. As you can see, this is the right anterior thoracotomy to the mitral valve replacement or the tricuspid valve repair. An important development which I think is important, especially in many cities and tier 2 and tier 3 cities, is the availability of the devices by which the patient can monitor the INR at home. So like the blood sugar, there are devices available where the patient can monitor the INR at home, because the patient has to monitor the anticoagulation at a regular interval. And the second development in the anticoagulation management is the availability of newer valve where less anticoagulation is required. So the patient can buy this machine, and like blood sugar, can do the INR at home. Not only the patient can monitor the INR at home, but patient can also actually manage the INR at home on his own. And there are many studies where the results of the self-monitoring of the INR and self-management have been found to be better than the institutional management or the office management. So we advise our patients, especially those who are educated, to buy this machine and do the INR at home. There have been many advances in the designs of the valve also, and there are two areas where the companies have focused to develop liver valve, particularly the tissue valve. One is to decrease the structural valve degeneration by taking anti-calcification measures, because the valve degenerates by calcification. So many companies, they have come up with multiple anti-calcification treatments which gives a longer durability to the valve. And the second development has been the possibility of a future valving valve. That means when this valve degenerates, without doing a second open heart surgery or a second treat or a redo, one can do a valve implantation through the transcatheter technique. And this is one of the valve which is basically has been developed for the Spiris valve, which is quite a third generation valve with these features. And this becomes important, especially in the patients in 60s and below, where the structural valve degeneration is faster. So in these patients, these valves, which are third generation valves, certainly gives better results. The companies have incorporated many technologies to make the valve future valve friendly, and this is one of the technology. As you can see, the valve size you can see under the fluoroscopy, which helps you in the future transcatheter implantation of the valve. And there are many companies who are using this. They have incorporated these technologies. For example, this is another valve with the radiopaque markers. They have been incorporated in this valve. So when the interventionist will be doing a valve, this should help you to not only size the valve but also implant more accurately.
Another development is the availability of the sutureless valve. And as the name shows, these are the valves which we implant without sutures. Normally we use the sutures to implant the valve, but this is a valve which is self-expanding. It's a bovine pericardial valve and is implanted without the sutures. And the advantage is that this valve, when there are no sutures, can be implanted faster, so surgical time is less, the results are better, and hemodynamics also is better. And finally, only very recently, the polymer valve has also become available in our country. It has been developed by a company called Foldex. The clinical studies were done about 2 years back, and we were also part of that clinical trial. Now it has been commercially launched only 2 months back, and we did one of the first valve plantations in the country. And this valve has the advantage that this will not degenerate, and the anticoagulation will be required only for a limited period. So this is expected to give the advantage of both the mechanical valve as well as the tissue valve. Now very briefly, some of the advances in coronary artery bypass grafting. Again, one of the development is minimally invasive coronary artery bypass. As I mentioned, a standard bypass or a standard valve procedure is performed through median stenotomy and cardiopulmonary bypass. But this certainly has 2 important drawbacks. The stenotomy certainly takes few weeks to heal, and there is a scar in the middle. And cardiopulmonary bypass, that means the use of hardware machine, certainly gives certain unphysiological effects on the body. So we have developed the minimally invasive techniques. So this is the standard coronary artery bypass grafting on counter. As you can see, the heart is not beating. It is not beating. It is still because we have stopped the heart, and it is easier for us to perform the surgery on a still heart or an arrested heart. The patient is in the heart-lung machine, so the circulation is being supported by the heart-lung machine as well as the oxygenation. And you can see left internal coronary artery being anastomosed to the left anterior descending artery. So this used to be a standard coronary artery bypass grafting till a few years back. But the minimally invasive cardiac surgery gives not only provide education, but also a faster recovery and better outcomes. By definition, minimally invasive cardiac surgery is when we can avoid the stenotomy, or we can avoid cardiopulmonary bypass, or we can avoid both cardiopulmonary bypass or the stenotomy. There are many techniques which have developed over the last 20 years to do this minimally invasive coronary artery bypass grafting. This was the first technique which was developed, so-called minimally invasive direct coronary artery bypass or VIDCAP, where we make a small anterior thoracotomy, harvest the internal coronary artery and anastomose it to the left anterior descending artery. And you can see the scar is small, the recovery will be faster, and cosmetic result will be better. But there is a limitation of VIDCAP that we can do certain number of grafts. When patient needs multiple grafts, then we use the technique which is known as off-coronary artery bypass grafting, or so-called beating heart coronary artery bypass grafting. And in this technique, anyway, there are some videos just to show how we do the beating heart surgery, but never mind. We also use endoscopic techniques to harvest the conduits. Conduits are basically the surface laying the radial artery, and this becomes important particularly in obese patients where the scar, totally scar is better, but the chances of infection are much less. So we use that for the endoscopic vein harvesting as well as the endoscopic
needed harvesting. And we also try to use more and more arteries rather than veins, because the arterial grafts are better than the veins and it gives longer results to the patient. So to summarize, friends, coronary artery bypass grafting and their surgery has evolved in the last 6 decades, and some of the advances include the development of minimally invasive surgery, off-bone coronary artery bypass grafting, endoscopic surgery, use of arterial grafts, and newer generation of valves. With that, I thank you all for your attention. Thank you sir for an excellent, insightful presentation. A big round of applause for sir. So we'll take a few question and answers from the audience. Ramdharji, वो mic एक बार थोड़ा forward कर mic. So please feel free to ask any question. कार्डियक सर्जरी से Good evening, sir. Good evening. Sir, just 2 or 3 minutes discussion about a patient. A 40 years old male patient underwent aortic dissection in December 2014. Underwent surgery for aortic dissection. First, he was diagnosed for aortic dissection in December 2014. Age 40 years. Which one would you prefer? So aortic dissection, I'm sure all of you must know, is basically an emergency. Yeah. So the first aim is to save the patient's life. Yeah. And I'm sure everyone probably may not know the mortality of aortic dissection. Survival rate is 0.03%. No. The mortality of aortic dissection without surgery is 1% per hour. Yeah. So in 2 days, in 48 hours, unfortunately half of the patients will die. So your first aim is to save the surgery, and the commonest surgery which is done in the night are 2, the transplant and the aortic dissection. At 40 years, you use mechanical valve. So mechanical conduit, obviously, which is a graft conduit. So there is a valve inside the graft. It's a conduit of mechanical valve. So mechanical valve. Well, however, his attendants decided the opposite way. They thought that let's use bioprosthetic valve to prevent the use of warfarin lifelong and lifestyle habits, fooding habits and other complications of warfarin. And they thought that might be in next few decades or years some technology may develop. So that time we can use it. However, he was told that the life of bioprosthetic valve is 18 to 20 years. No. At 40 years, the life is 8 to 10 years. The younger the patient, the faster the degeneration. Even today, the average life, the durability of a tissue valve, even third generation valve, is expected to be 20 years, but still third generation valve. Now my question is, till date he underwent echocardiography 3 months back. The valve was perfectly normal, no leakage, no nothing. The diameter of the valve was 25 mm. Now whenever the valve degenerates, can he opt for TAVI or TAVR? Sure, he can. Because at that time he was told that you will have to undergo pentals again with 25 mm of background tube of ascending aorta in which the coronaries were reinforced. So he said, okay, fine, 18 years I decided, after 18 years, let me live stress-free for 18 years. 3 months back, Which valve was used? Do you have any idea which valve was used? bioprosthetic valve was used. I have no idea which valve was used. Bioprosthetic valve was used. It was triple leaflet valve. Triple leaflet valve. Diameter was 25 mm. Now 3 months back, his echo was perfectly normal with no leakage, no regurgitation. Everything was normal. But will he have to undergo pentals again, or minimally invasive can do the thing or transcatheter implantation? So
valve in valve can be done. It will depend on the anatomy, including where the colonies have been implanted, and also the anatomy of this valve, because the previous valves, not all of them are suitable for valve in valve, but most of the valves currently available are suitable for valve in valve. So maybe this patient might also be treated by valve in valve, but obviously it will be decided by doing what we call as a type protocol of CT scan and CT. The surgery was performed by Dr. Anil Bhan. Right. But 40 is Patient's name. Patient's name Dr. Anil Bhan. A big round of applause. Ye doctor. New myself. very good, very good. So interestingly, one of our trainees, उन्होंने आपसे कंसल्टेशन की है. one of our trainees who was with us many years back, his wife required a double valve replacement at the age of 36 years. And he obviously had a lot of discussions. And he decided for a tissue valve in at 36. So he obviously consulted multiple surgeons, everyone except one said that you should have mechanical valve. But obviously he was and he knew that it should be mechanical valve. But when his wife was told, she was told about anticoagulation, the dietary restriction and all those things, she said, tissue valve नहीं लगवा देते आप मेरे को. So they decided for tissue valve. So but I think it's about 11 years now. So she's been fine. So obviously, you know, the patient will do good. But like you mentioned, the lifestyle definitely will be better than a mechanical valve because you won't have to worry about the anticoagulation. But the patient has to fully understand that the second intervention would be required. That's what my question. Whether transcatheter It may be possible. It may be possible. Yeah, it is. At that time it was not. It is possible. It is possible. We have seen patients who have undergone bypass. They are getting. Which year was it? Which year is it? December 2014. As I said, we'll have to steadily Any other question? Thank you, sir. So the surgeon is here. If you have any question in your mind related with any cardiac surgery, you can ask. So one question was always asked, sir. What is the most of the patients are being prescribed ecosprin along with some anticoagulation. So what do you recommend? When patients develop some bleeding, can we stop the ecosprin, or after the bleeding stops, then we can continue ecosprin? What exactly is the recommendation guidelines? How strongly is recommended after the valve replacement? After the valve replacement with anticoagulation. So obviously anticoagulation, you have to go to mechanical valve obviously. Yeah. Yes. So anti-vitamin antagonist would be recommended to all the patients. The ecosprin is not always recommended. It is recommended in so-called little high-risk patients. For example, in mitral valve, the patient has a large atrium or obviously a lot of these patients are in atrial fibrillation. And if you feel that the risk of thromboembolism may be on the higher side, we do add ecosprin, but the ecosprin can be stopped anytime as long as we can continue with the vitamin antagonist. The challenge becomes when patient needs a second surgery for something else. Then we have to stop the anticoagulation for a temporary period, and that has to be bridged by hypertension. For the tissue valve, for the patient who has atrial fibrillation, normally the recommendation is that we will be using mechanical valve at any age. But within that category now, tissue valve is recommended after 65, and then one can use just the oral anticoagulants. But specifically answering your question, the vitamin K antagonist should be continued lifelong. It can be stopped if patient needs some kind of a surgery, temporarily increased by ecosprin is not mandatory. So ecosprin is only mandatory for those patients who are at very high risk for thromboembolism. If any patient develop any bleeding during this course, then one can stop ecosprin and continue with the anticoagulation with the lower threshold, lower range of anticoagulation. Yes, madam. I wanted to ask you 2-3 questions regarding CABG.
So what do you prefer? A person should go for angioplasty or CABG? First question. And second, I wanted to ask is after CABG, the ECG report or the ECG signal, does it change or it remains the same, like corrected one, or it goes to worse? Because of the deviation of the heart, they open and so many times you have seen that ECG goes, it is deviated, it's not normal. But it creates doubt in mind. Like should we go for another angioplasty or some other? Okay, so the translation first question you asked, patient with coronary disease, whether should be managed by angioplasty or stenting or surgery. There are definite guidelines based on the coronary anatomy and patient's own factors. So the decision for angioplasty or stenting versus the surgery would be based on the anatomy of the coronary lesions. That means whether it is a single vessel disease, a double vessel disease, or a triple vessel disease, or a left vein disease, to the LV function, whether the patient is diabetic or non-diabetic. Its syntax score, there is a score which we calculate based on the patient's coronary angiogram. So I think, as I mentioned, there are large number of trials which have compared the results, and then based on those trials, there are some definite guidelines. But just to give a simple answer, patients who have single vessel disease, and it is easily amenable to angioplasty. Angioplasty should be preferred. Even in double vessel disease, if the patient has straightforward lesions, the stenting would be preferred. But patients with triple vessel disease, left vein disease, patients who are diabetic with triple vessel disease with LV dysfunction, or if there is a proximal calcified lesions, the CABG would be preferred. Answering the second question, the ECG doesn't change after surgery. It should not change after surgery. It should remain exactly the same. But if there is a change in the ECG, you have to see why this has changed. So you look at the echo, you look at your cardiac enzymes, you look at and other parameters. In general, everything should remain the same. Every function should remain the same. Same means what? So if somebody's ejection fraction is 40%, it should remain 40%. Somebody's ejection fraction is 60%. No, I'm just asking. Before operations, ECG. It should remain normal. It should remain exactly the same. Like the operator, like any other Oh, yes, absolutely. So based on the ECG, you can't say that this patient has undergone a bypass. No, never. It has to be exactly the same. Like if there is an ST elevation. If there is an ST elevation, that means there is a problem. Earlier before the operation. Later it is not there, but the figure is not. The graph is not there. Essentially, if there is an ECG change, for example, like you mentioned ST elevation, then one has to. Then I'll contact. Sure. So any other question? So last question, sir, I just received on my WhatsApp. A lot of patients being offered microangioplasty ring or tricuspid angioplasty ring. So what exactly is the angioplasty profile? For angioplasty. So the recommendation for angioplasty is vitamin K antagonist for 3 months. And after that, we start equal screening. Or if there is patient has some other risk factor, then we have to change. Otherwise, anticoagulation for 3 months. Please, a big round of applause for Dr. Judges, Dr. Krishnan, to please come forward to present the memento and certificate. Of learning continues. Our next speaker is someone whose work and reputation inspires trust and admiration. A brilliant clinician, which is amongst the largest program in the country. He has presented papers at several international and national conferences and published more than 150 scientific papers in index journals including NARAIN. He has also authored 30 chapters in textbooks
of nephrology. He has received several awards for my original contributions to the field of kidney disease. His work has received recognition from the Indian Council of Medical Research, Indian Academy of Pediatrics. So kindly put your hands together and welcome Dr. Sanjeev Kumar. It is a great honor and privilege to be invited to deliver this prestigious Dr. Jhingran Oration. I came here as a speaker, but I go back thoroughly inspired by the work that Dr. Jhingran has done, and he certainly left a great legacy for all of us to follow. So today I will be talking to you about pre-dialysis management of chronic kidney disease and how as primary care physicians you can really make a big difference. When I talk about chronic kidney disease, I am reminded of this quote which I have picked up from late President Kalam's book, Wings of Fire, that the illiterate of the future are not those who can't read or write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. And in that sense, this very well applies to chronic kidney disease, because most of the drugs that we are using today, we have had to learn over the last couple of years, and we didn't even dream when I was doing my training in nephrology. And at the same time, there has been unlearning of some of the past concepts. First of all, a quick recap as to what do we understand by chronic kidney disease. So if you have abnormalities of kidney structure or function for more than 3 months with implications for health. And you need to have either of these, either an albumin creatinine ratio of more than 30 in the first morning specimen, markers of kidney damage, that is, an ultrasound abnormality, or a GFR of less than 60. If they are confirmed twice over a period of 3 months, then this patient has got chronic kidney disease. Now, most of you would be thinking that it is only a nephrologist's job, but there are very few nephrologists in the country, and as I understand, Gorakhpur also has just only 2 qualified nephrologists. It's everyone's problem. For a surgeon, it is very important because perioperative renal dysfunction, fluids, electrolytes, NSAIDs are all going to be decided based on the kidney function. For the anesthetist also, the fluids and electrolytes are very important. For a physician, the drugs dosing. For an obstetrician, the outcomes of pregnancy are directly related to the underlying kidney function prior to conception. So if you have water renal dysfunction, you can vouch that this pregnancy is not going to complete its term, and the child is also going to be, neither a stillbirth or a preterm. Radiologists must be aware, because inadvertently they might subject these patients to contrast, and these patients can develop contrast into kidney damage, putting him at a risk for litigation. Intensivists again, fluids, electrolytes, dosing, and cardiologists again, contrast nephropathy because of doing angiography, and also these patients are also at high risk for cardiovascular disease. So I will share with you some actual patients and how they highlight the problem. Chronic kidney disease, by the way, is not all that rare, and our study by the Indian Society of Nephrology, when I was the president, we did a nationwide survey. It showed that about 15 to 20% of all people have got some degree of chronic kidney disease. This is a 44-year-old lady who was a school teacher in Delhi Public School, Vasant presented to our emergency with accelerated hypertension and breathlessness. When we went back into the history, in 2003, she did have severe hypertension, but at that point of time, again, a non-invasive cardiac evaluation was done, and nothing much was done after that, other than putting her in a deadlock. But when she presented this time, she had serum creatinine of 8.4. This is in 2007, I'm telling you. Ultrasound, bilateral protracted kidneys, stage 5 chronic kidney disease, initiated on dialysis, husband donated a kidney quickly in April 2007. She is now 18 years post-transplant. And not only that, she has finished her PhD, was teaching at her college, married her daughters, and now is retired peacefully. So that is what, how the management of chronic kidney disease has changed. This is another such patient which some of you might see in your clinic, a diabetic for last 7 years, severe hypertension, retinopathy, creatinine of 4.4, which means the kidney function, which is eGFR, is just 22. This is what diabetic nephropathy. You might present to a surgeon with a inguinal hernia, come to a physician with acute gastroenteritis,
He might have chest pain requiring angiography or abdominal pain requiring a contrast CT. So we need to know what the kidney function is, the baseline kidney function is there. Now this was a 63-year-old gentleman who was diabetic for 9 years, presented to one of my physician colleagues with edema, had blood pressure of 130/80. Urine microalbuminuria was negative, serum creatinine was 1.3, ultrasound normal size creatinine, and he asked me, is it renal in origin? But he wasn't very sure because there was no proteinuria, and I'll come back to this patient. So we need to diagnose kidney disease early using simple kidney function tests. Then we can tell you about the clinical approach and options for renal replacement therapy. First of all, urine analysis even today remains the cheapest and the simplest test for chronic kidney disease. If the first morning specimen is showing you a low specific gravity of 1010, that means this patient has got chronic kidney disease. And albuminuria is a hallmark of chronic kidney disease. But quite often we see patients coming into our OPDs, the urine examination telling us NAD, and I think these labs are being very honest. NAD means not adequately done. So that's why a good urine examination is one which you should ideally do yourself or get it done from a reliable lab. Now, the next test is a urine albumin quantification, and I remember my days, during my tenure at SCPGI, we used to hand over big cans to these patients, and it was one of the toughest things to collect every drop of urine over 24 hours, but no longer required. And this study showed that the first morning specimen urine albumin creatinine ratio correlates well within 24 hours. So you don't have to burden, you just need a first morning specimen, and that will be sufficient. But you might have transient microalbuminuria because of fever, heavy exercise, or even in a UTI. That's why we always say that get it confirmed once more and always counsel the patients. Now the next test is something we all know. We always thought that urea and creatinine are the gold standard for diagnosing chronic kidney disease. But this chart tells you that why it is not 24 karat gold. So this is the serum creatinine, this is the GFR. We all know that GFR normal is about 100 to 120. As you can see, when this GFR starts decreasing, the serum creatinine is still normal until the GFR goes below 60. And the urea actually rises even much earlier. So therefore, we have now given up talking about urea and creatinine, and we talk about eGFR. And this is again the slide which tells you 3 different individuals of different age groups. Same serum creatinine. You calculate the eGFR by a formula-based equation. Now, 24-year-old man, eGFR is more than 60. There is nothing else. It's a normal kidney function. 63-year-old man, the same serum creatinine, 1.3, GFR is 59. And in an 80-year-old lady, the GFR is just 42. So that's why we never, extrapolate serum creatinine to percentage kidney function. So what do? Well, we are living in an era where everybody's got a cell phone. You can download these calculators, and it's so simple that even your paramedical can calculate the eGFR for you. You just have to plug the age and the serum creatinine. Now, based on this, we can classify chronic kidney disease into 5 different stages and A1, A2, A3 depending on the proteinuria. As you can see, the better the GFR, the less the proteinuria, the lower the risk. But as the GFR decreases, the proteinuria increases, you go into the red zone. We call it the heat map. So red spells danger. So any patient whose GFR is say between 30 to 44 and has got very high proteinuria is going to end up in non-dialysis. So I now come back to the same patient, 63-year-old male diabetic. We did an eGFR calculation, it was 59, and we confirmed it again 2 weeks later. So this patient had chronic kidney disease with a seemingly normal serum creatinine. Next, we did a very simple study. We looked at health records from our, PHC, preventive health clinic. So these are patients coming for an annual health checkup and going back just because they are getting it free from their employer or they have health insurance. And when we retrospectively analyze all the records, 74 of the 774 patients had chronic kidney disease, close to about 9.5%. So they had gone back, they were asymptomatic.
Now, this is a study published in Lancet 2008, very relevant even today, looking at nearly 500,000 individuals more than 20 years, followed up for 13 years. The prevalence of CKD was close to 12% in this community-based study. What is very interesting was that these patients had an 83% higher mortality for all cause and 100% higher mortality for cardiovascular disease. So these patients are, going to die of cardiovascular disease. So if you want to pick up cardiovascular disease, then you have to screen CKD patients. So you have to know the eGFR. So CKD should be remembered for C for check eGFR, K for kick off a conversation with your patient, and D for diagnosing early. Now, these are the different stages of CKD. So stage 1, stage 2, stage 3A, the primary care physician, which is you, is the one who's going to be the frontline physician. The nephrologist is there just for confirming the diagnosis. But once the patient crosses stage 3B, then the nephrologist should take over because there is more intensive management and counseling is required. So as primary care practitioners, what you can do is you can recognize and test at-risk patients, all hypertension, all diabetic patients, family history of chronic kidney disease, obese. We can educate patients about CKD treatment. Most important, control blood pressure and sugar because these are the commonest causes of chronic kidney disease, address other cardiovascular diseases, and also look at the eGFRs and ACRs. And actually, you should encourage all the labs to do automatic eGFR reporting, which is being done now in a lot of cities in our country. Then you should look at anemia, malnutrition, chronic kidney disease, nutritional counseling, counsel the patient, consult a nephrologist for validation of a diagnosis, and refer to the nephrologist when you think you require some help. And this is a study published in American Journal of Kidney Diseases showing how primary care physicians made a big difference. So these are patients who are diagnosed early by physicians and on regular follow-up, and as you can see, the kidney function is declining slowly. The life of the kidneys, is extended. Whereas undiagnosed patients take a painkiller like NSAID, the kidney function worsens, undergo contrast, further worsening, antibiotics like aminoglycosides, diuretics, and progress much faster to end-stage kidney disease. Next, once you have diagnosed, can we do something? In 2025, we can do a lot. First and foremost is blood pressure control, and the target blood pressure is 130 by 80 or 125 by 75. For diabetics, blood sugar control, and for controlling proteinuria, now we have 4 very important agents. ACE inhibitors are now, we all know, SGLT2 blockers, mineral oil receptor agonists like finerenone are available, and we also now have GLP-1 receptor agonists like Rybelsus, Ozempic. Correctly anemia use erythropoietin. We also now have what we call oral agents called HIF, PHI inhibitors. Desidustat is one such molecule which has been innovated in India. So bone disease needs to be managed. Lipids, obviously, atorvastatin should be given because they are high risk for cardiovascular disease. Now this is the landmark MPA kidney study which used empagliflozin in all chronic kidney disease patients, and they found this was a potentially very important outcome, that they could delay end-stage kidney disease by up to 27 years and avoid 4,000 hemodialysis sessions for chronic kidney disease. So if empagliflozin was used at 85 years, you could give an extra kidney years of 27 years. 75 EGFR, 23 years, but even at 30 ml, you could give 9 extra years, and these 4,000 sessions could have been avoided here. And this is a very cheap drug. We are living in a land where we have biosimilars available, so it is easily affordable. So these are the 4 pillars of therapy. Every CKD patient should be on ACE inhibitors or ARBs, but monitor for hypertension, also and look especially for hyperkalemia. SGLT2 inhibitors, be careful of urine infections, monitor them. Non-steroidal MRAs like finerenone. Hyperkalemia is an issue, and GLP-1 receptor agonists like semaglutide. Some of these patients develop nausea and diarrhea.
This is reserved for diabetic kidney disease patients, but the first three can be used in all chronic kidney disease patients. So this is the 4-pillar strategy, and they act at different times, and they are, renal protection. But once the patient's kidney function goes below stage 5, then these are the only options. Kidney transplantation is still the best option. Maintenance dialysis or continuous ambulatory peritoneal dialysis are two other alternatives. But the amount of money the patient is going to spend on dialysis in a year is equivalent to what he will undergo for kidney transplant. So currently, kidney transplant should be offered for all dialysis patients under 80 years. So we are doing geriatric transplants. If the GFR goes below 10, even without dialysis, we should do preemptive transplant and perhaps earlier in children. This is a very important slide looking at the survivors following. This is dialysis, this is cadaveric transplant. So this is dialysis, cadaveric transplant, this is live-related transplant. As you can see, even at 1 year, the survivors are far better in live-related transplant compared to dialysis, and at 5 years and 10 years, the dialysis survivors are 30% or maybe just 11%. So kidney transplant is the best possible option. And now we can do transplant even if there is no blood group match. If the patient is HIV positive, if a patient has got previous transplant, we can do steroid-free transplant. We can do paired kidney exchange between two patients, where the blood groups do not match. We can do allow the families to exchange. Then we can do second kidney transplants also now. This is one patient who is now 11 years post-transplant. The blood group was not matching. His wife donated, and earlier on he was dependent on his family to support. Now he is earning not only for his wife and children, but also supporting his parents. So that is how kidney transplant transforms lives. And the long-term survivors of kidney transplant are now close to 30 to 40 years. The longest kidney transplant in India is 46 years. So to sum up, we need to make an early diagnosis of chronic kidney disease. Nephrology referral, the collaborative approach is important. Evaluate for reversible factors, retard progression of chronic kidney disease, extend the life of the kidneys. Kidney transplant is the best option that should be offered, and dialysis is a stopgap measure, and we can do transplants even if there is no blood response. Now, one of the biggest challenges you all agree in today's world is this so-called alternative medicine. And this is also, we have had patients coming to us spending more than 5 lakhs because they went into all kinds of alternative therapy. This is there on the social media. I have not made up all this. So you can see a lot of these patients are being, misled by this. And to counter this, I think it's all of us, we have to educate our patients. This is my own initiative. I have started a YouTube channel about nearly 5 years back during COVID time. I have now more than 50 lakh views, 65,000 subscribers, and we are trying to give an authoritative information to patients of chronic kidney disease as well as their relatives. And if anybody of you wants to use this resource, you can refer to this. And on this, our work has been recognized by the late former Vice President Naidu. We were awarded as one of the finest transplant centers in the country. And I end on this note by Robert Frost that we have promises to keep and miles to go before we sleep and miles to go before we sleep. Thank you for your attention. If there are any questions, I will be happy to take. Thank you so much, sir, for a very crisp and practical presentation. A big round of applause for Dr. Sanjeev Gulati. So, if there are any questions on this very pertinent topic from audience, you can ask from a licensed nephrologist. Yes, sir. Sorry, sir? ACR is better than urinary microalbuminemia. So, yes, routine microalbuminemia, if we do, it depends on the concentration of the urine specimen.
If it's a dilute specimen, you get an artificially low one. So that's why always do an albumin-creatinine ratio that takes into account for the urinary dilution or concentration, and that is what is recommended by all international kidney societies. It is the gold standard, but as I said, one, we should avoid doing it if the patient has fever. We should also tell them to give it the first morning specimen, not after exercise. And even if it is having a UTI, just don't do it. And also should be confirmed on 2 occasions. Excellent. Any other question? So I have just received one question, sir. What are the safest antibiotics one can use in patients with azotemia and acute renal failure in ICU setting? There, one should not need the dose modification. All antibiotics can be used other than aminoglycosides, which anyways are not being used that often. But the caveat here is that the drug doses change, or depending on the degree of kidney function. So you have to have your drug calculators. And they are available. You can use MedScan, a lot of these. So you go into that, you calculate the EGFR, and then look at the drug dose that is to be used. Any antibiotic which can be used without any drug calculation on a practical basis? Not many patients here and there, and you have to use some antibiotics. All antibiotics at different levels of kidney function. These antibiotics will require. So that's why I said, knowing your kidney patient's EGFR or kidney function is very important for all. Even for doxycycline, clindamycin and linezolid? Well, yeah, doxycycline at least till stage 4. That's a good one that we point out, don't do that. But yes, doxycycline can be used. Clindamycin requires modification. Doxycycline stands apart. 100 mg twice daily will get away. And linezolid? Linezolid also 600 mg twice daily you will get away with regardless of the kidney function. These are probably two good. I think you brought up 2 very good points. And one you have highlighted one use of cinacalcet. So how frequently and how one can approach? Yeah, it is used in hyperparathyroidism of chronic kidney disease. When the parathyroid hormone goes up to control the PTH value. So you need to monitor the PTH because these patients develop metabolic bone disease as we call it, and we have to diagnose it early. Otherwise, a lot of these patients. When I was at SGPGI, we used to see patients coming to us with fractures, and then somebody got the KFT done and suddenly found that the creatinine is high. It was because they had metabolic bone disease. So cinacalcet reduces the PTH level to lower levels to the. There are different targets for different levels of serum creatinine. But that's one. Should we regularly practice to get the serum parathyroid hormone in CKD patients? Yes, parathyroid hormone should be done. The guidelines say at different levels of chronic kidney disease. So if you are stage 1, stage 2, you should get once in 6 months. Stage 3, you should get every quarterly. Stage 3, stage 4, every 3 months, and stage 5 again monthly. Excellent, excellent. A big round of applause for Dr. Sanjeev Lawry. So, as we are reaching to the end of the oration, I would like to request Dr. A.P. Gupta sir to please come forward to present the vote of thanks. So Dr. Jhingran sacrifice teaches us one very eternal truth, that the heart of the doctor must beat not just with the science but with the service, courage and compassion. I request Dr. Pratibha ma'am, our secretary, Dr. Y. Singh, to please come forward to present the certificate. The momentum to our secretary and the scientific secretary also. So because they have done a lot of work, very hard work to make this program so grand success. So on behalf of this IMA, I request Dr. Rajesh Gupta, please come and give a momentum to our secretary, Dr. Y. Singh. Okay to Dr. P.C. Sai, momentum. And there's so many things, so many times. आज का कार्यक्रम आईएमए का एनुअल साइंटिफिक मीट बहुत ही प्रेस्टिजियस झिंगरन मेमोरियल ओरेशन के अवसर पर मैं डॉक्टर A.P. गुप्ता आप सभी को अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं।
और हमारे तो चीफ गेस्ट चले गए, तो उनके बारे में क्या बताना, सबको आप लोगों को पता है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और रेलवे के हमारे सीएमडी साहब भी चले गए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इसीलिए कि उन्होंने इतना अच्छा परिसर हम लोग को कराते हैं हर साल कि बाकी IIM गोरखपुर हमेशा झिंगरन मेमोरियल ऑपरेशन करता है और वो सारा व्यवस्था करवा देते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो है नहीं, लेकिन हम उनके प्रांगण में सारी सुविधा के साथ अपना ये ऑपरेशन संपन्न किया है सफलता के साथ। धन्यवाद उनको, है नहीं। हमारे CMO साहब भी चले गए हैं, उनको भी धन्यवाद। हर प्रोग्राम में आ जाते हैं और हम सब के साथ रहते हैं और हम सब के एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं। हमारे ब्लड स्पीकर जो 40 स्कॉट हॉस्पिटल दिल्ली से उतने दूर से आए हैं और हम लोग को IIM की इन्विटेशन पे यहाँ के उन्होंने इतना अच्छा लेक्चर दिया है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर डॉक्टर GS मेहरावल सर, कार्डियक सर्जन, जो इतने दूर से आप लोग आके हम लोग को ज्ञान वर्धन करें, बहुत 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 धन्यवाद सर। IIM गोरखपुर आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है। और डॉक्टर संजीव गुलाटी सर, जो नेफ्रोलॉजी के वहाँ पे स्कॉट्स फोर्टिस हॉस्पिटल में इतना काम करते हैं, वो अपना व्याख्यान यहाँ देंगे, हम सबको काफ़ी आई ओपनिंग टॉक दिया है, उनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग दिल से आए और हम लोग के साथ हुए। एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए सब लोग रुके हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा। और सभागार में बचे हुए जो भी हमारे सीनियर जो आए चले गए, जो मौजूद है, उन सबको हम सबको IIM की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब, बिना श्रोता का कोई प्रोग्राम नहीं होता है, बिना श्रोता का कोई ऑपरेशन नहीं होता है। तो आप सबको धन्यवाद, जो बचे जो चले गए मेरा धन्यवाद IIM की तरफ से, उन सब तक पहुँच सके। और मीडिया के लोग तो कुछ आए नहीं, साथ में हमारे टीम के जो हमारे शंकर हैं, रामधरस हैं, हमारे कैमरा और वीडियोग्राफी मैन जो है दीपक हैं, रामचंद्र है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने भी इस कार्यक्रम को संपन्न करने में बहुत दिनों से बहुत मेहनत करके यहाँ आज इतना सफलतापूर्वक करवाया है। और जो हमारे खाना खिलाने वाले कैटरर्स हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद IIM की तरफ से। धन्यवाद। जय आमिर, जय